about the gratitude. So today we are going to be talking about power of gratitude. So how many of you know what is gratitude? I would like people to share. Anybody would like to share? Yes, gratitude is about being grateful, thankful, and so just telling the cosmos universe that whoever the superior energy, that whatever has been given to us, very respectfully, gracefully accepting it, and gratitude, and it multiplies. The universe has the power to multiply. Absolutely. So it's a very good. Absolutely. Exactly that what it is, and that's what I'm going to be talking about today. The power of gratitude. How we can actually transform our lives through gratitude. Yeah. How many of you have seen the movie Secret or read the book Secret? I've seen. Yeah, okay. I've seen. Okay. Anybody else? So what I'm going to talk about is, there's a universal law called the law of attraction. How many of you know about the law of attraction? आजकल तो बहुत programs हो रहे हैं and बहुत सारे coaches are teaching manifestation through law of attraction. Yeah, true. So in that movie, it is talked about the universal law called the law of attraction. अब ये जो law है, it is working at all times. हमें नहीं पता. Like law of gravity, जब तक हमने gravity के बारे में नहीं पढ़ा कि एक law होता है, law of gravity, we didn't know. But इतना तो पता था ना, हम जो भी फेंकेंगे वो नीचे ही जाएगा, कुछ ऊपर नहीं जाने वाला है. सब कुछ नीचे ही गिरता है ना जब हम कुछ फेंकते हैं, whether it is an apple or a man, right? You think anything which you throw goes down, right? वो जमीन पे गिरता है जाके. We didn't know that is called law of gravity, right? Till the time we went to school and read about it, we didn't know about it. Similarly, the law of attraction is also a universal law, and it is working at all times. हमें पता हो ना पता हो, काम तो वो करेगा, मेरे लिए भी करेगा, आपके लिए भी करेगा, वो कर रहा है हर टाइम. So wherever we are right now in our life, it's all because of our own self. Why? Because law of attraction works through our thoughts and feelings. If you remember, there was a feelings chart which was shared in the movie, which had the good feelings and bad feelings chart. The good feelings are like love, gratitude, enthusiasm, excitement, hope, joy. And the negative feelings are like anger, irritation, worry, criticism, blame, right? Anger, hate, envy, guilt, fear. ये सारे के सारे negative feelings हैं. And 80 to 90% we are actually thinking negative thoughts. Just analyze it. Take a moment. देखो अपने दिन में आप कितनी बार नेगेटिव और कितनी बार पॉजिटिव सोचते हो, कितनी बार आप होपफुल होते हो, कितनी बार एक्साइटेड होते हो. Just imagine 80 to 90% of our time we are just thinking about negative thoughts. No wonder our life is the way it is, right? So 60,000 thoughts जो हमारे पूरे दिन में आते हैं, उसमें से 80 to 90% अगर नेगेटिव हैं, तो पता कैसे चले कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं? It is through our feelings, right? अब इनको शिफ्ट करने के लिए क्या हम हमेशा जॉयफुल रह सकते हैं पूरे दिन में? Tell me, is it possible to stay joyful throughout the day? Is it possible to stay excited throughout the day? Full of enthu all the time? The easiest way to stay positive is practicing gratitude, which is the highest
अगर आप देखोगे फीलिंग चार्ट में तो वो सबसे ऊपर है लव से पहले. लव इज द हाईएस्ट. लव से पहले है ग्रेटिट्यूड. Now gratitude is something which we can practice, and Rhonda has done such a favor to us. I'm so grateful to her that she created this book called The Magic. This is the book, Magic. What is this magic? This magic is all about gratitude. कि आप gratitude को अपनी लाइफ में on a day to day basis किस तरह से incorporate कर सकते हो, inculcate कर सकते हो अपनी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ जो है वो मैजिकल हो जाए, वो पॉजिटिव हो जाए, वो वैसी हो जाए जैसी आप चाहते हो. So she's written very beautiful thing saying that gratitude is a bridge between where you are and where you want to reach. हम सबकी जिंदगी जैसी भी चल रही है, पर हम कुछ तो बेटर चाहते हैं ना इससे. We have a dream life कि हाय काश जिंदगी ऐसी होती, काश मैं ये कर सकता, काश मैं ये कर सकती. So we have certain, you know, parameters to say कि अरे यार लाइफ इतनी अच्छी हो सकती थी, पर है नहीं अभी. So gratitude actually works as a bridge between where you are and where you want to reach. Right? तो रोंडा ने क्या किया, जितने भी स्क्रिप्चर्स, हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं ना, रिलीजियस बुक्स जितनी भी हैं, चाहे वो कुरान है, चाहे वो गीता है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब है, चाहे वो बाइबल है, everywhere it is written to practice gratitude. But because we don't know how to read it, most of us don't know. Whatever has been fed to us, the interpretations, whatever has been fed to us, we just take that. But उसकी प्रैक्टिकलिटी कुछ नहीं है, हमने कुछ करा ही नहीं है. सुनते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हाँ बहुत अच्छा, भागवत में ये लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है. We just listen to it and just forget about it. We have not been practicing it. We find it difficult to, you know, उसको अपनी जिंदगी में उतारना हमें मुश्किल लगता है, because वो बताया ही ऐसे जाता है. So Rhonda ने क्या किया? She culled out all that information from all the scriptures and made it very simple through this book, which is practically possible to practice every single day. And I have been doing this practice, and I've been holding sessions on this book for many years now, and people have really transformed their lives, different areas of their lives, by just practicing gratitude. Even I practiced and, you know, healed my eyes. I had problem with my eyes, and you know, doctor said, your one eye's vision is just going. And just by practicing gratitude, I am so much better, and I'm still practicing it. Every area of your life can be transformed by just practicing gratitude. Now, हमने सबने सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से, what goes around comes around. जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना? जैसे बीज बोओगे वैसे ही पौधा आएगा. हमने ये सब बहुत सुना है. And even Newton's law says every action has opposite reaction, equal and opposite reaction, right? जो भी आप एक्शन करते हो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वापस आता है. अब जो भी आप सोचते हो, and you know, this book, I think which I really love about this book is that it explains things scientifically and spiritually. आपको जो लेना आप वो ले लो. अगर आप बड़े लॉजिकल बंदे हो तो आप साइंटिफिकली भी उसको समझ सकते हो, and then you can also apply it spiritually also. तो ये दोनों को, you know, साथ लेके चलती है ये बुक. So it's talking about the Newton's law also, and it is talking about the scriptures also, because it's the same thing which is mentioned in both the places, right? अगर आप कोई बॉल फेंक के दीवार पे मारते हो तो वो वापस भी उसी स्पीड से वापस आपके पास आती है ना. तो सिमिलरली जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो, whatever you know, send in the universe comes back to you. Whatever goes around comes around. For example, आपने किसी को डांटा,
मान लो आपका कोई you have a servant or a maid and she's not done something properly and you just scolded that person, and you will be surprised somebody else will be talking to you in harsh and rude way. Somebody else. It's not exactly the same person, but it will come back to you. Maybe your husband speaks to you rudely in the evening. Maybe your child does that. Maybe a neighbor starts fighting with you. Something happens, we are not able to connect, but whatever we are doing is coming back to us. हमारे कर्म हमारे पास वापस लौट के आते हैं, कहते हैं ना. So whatever thoughts and feelings you are sending in the universe is what is coming back to you, right? So I told you, gratitude is like a bridge. The other thing which I love about it says gratitude for the things you have received right now in your life. When you're paying gratitude for it right now, you are actually ensuring, it's an insurance that you will receive abundance in future. हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ना जस्ट टू सेफ गार्ड आवरसेल्फ, है ना, कि कल को कुछ हो ना जाए. मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं कि अगर कल को खुदा ना खास्ता भगवान कुछ बीमारी आती है, वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, सो वी सेफ गार्ड कि हमारे पास पैसा होना चाहिए अपनी बीमारी के लिए. Similarly, we take life insurance and different kind of insurances we take just to safeguard ourselves. तो अगर हमें अपनी लाइफ में abundance को safeguard करना है, we want abundance to come into life. It could be in the area of health, it could be in the area of money, it could be in the area of relationships, it could be any area of your life, maybe your business, maybe your job, wherever you want abundance. The insurance for that is that whatever you have right now, be grateful for that. क्या हम grateful होते हैं हर चीज के लिए जो हमारे पास है? We are always complaining and criticizing and blaming. Light चली गई and we are always saying, ये light क्यों चली जाती है बार बार? We don't realize that जब होती है light तो हमने कभी उसके लिए thank you नहीं बोला, because we start taking things for granted. We start taking people for granted. Whenever we are taking things and people for granted, wherever it is, there is a lack of gratitude. We are not being grateful for that. And wherever there is no gratitude, things will start going down. There's a very good formula in this book which says, every time you complain about anything, wherever that thing is will drop 10 steps down. अगर आप किसी की बुराई करते हो तो उस रिश्ते में आपका रिश्ता 10 स्टेप नीचे चला जाएगा. आपने देखा होगा, in love marriages, what happens? They're very lovey-dovey in the initial stages and all, and then something happens and they start complaining and blaming each other. Every time one person is blaming, the relationship is going 10 steps down and they don't realize it. The other person also does that, and slowly, it comes down to zero and the divorce happens. What if we know that every time we are complaining, our relationship is going down and we are able to bring it back? It's very simple. If you complain for one thing, immediately pay gratitude, 10 gratitude for that particular area of your life to bring it back to the same level. It's a very good formula which you can apply in every area of your life. And Rhonda ने इस बुक में अपनी ना लाइफ शेयर करी कि सीक्रेट से पहले उसकी लाइफ कैसी थी. So she says her life was in a mess. उसके क्रेडिट कार्ड पे पूरा का पूरा डेब्ट चल रहा था because पूरा एग्जॉस्ट कर चुकी थी. Her company was on the verge of bankruptcy. Because of the stress and the challenges she was facing, her health was going down. Relationship के लिए टाइम ही नहीं था. Because relationship को भी nurture करना पड़ता है ना. Every relationship needs to be nurtured. अब वो nurture करने के लिए टाइम ही नहीं था. जब टाइम नहीं है तो रिश्ते भी बिगड़ रहे थे. So the relationship was also going, in a different direction totally.
and she was feeling so much of stress. आप में से कितने लोग इस चीज के साथ रेजोनेट कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ ना कुछ चल रहा है, इधर हेल्थ के एरिया में या रिश्तों के एरिया में, पैसे के एरिया में, हम सब की जिंदगी में कुछ ना कुछ उससे मिलता जुलता ही चल रहा है. But then when she came to know about gratitude, जब उसको सीक्रेट का पता चला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो कुछ भी कर सकती है, and she started paying gratitude, her life transformed. We all know her company is minting money. She's transforming lives all across the world through her books and her videos. So many people are benefited out of it. Her own life is full of joy because ultimately हमें क्या चाहिए? खुशी चाहिए ना. आप किसी से पूछो, उसके पास सब कुछ है, उससे पूछो यार तुझे क्या चाहिए? सर यार बस खुशी चाहिए, पीस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. So ultimately peace and happiness चाहिए ना. That is what she's experiencing, and that is what we also want to experience, right? So Abhi, I really want you to just take a moment and think about your life. आपकी life में कौन-कौन से areas हैं जहाँ पे things are not working? Because it's a audit you can do right now about your life. कि आप कहाँ पे gratitude practice कर रहे हो और कहाँ नहीं कर रहे हो? Because wherever you're practicing gratitude, your life का that area must be working really well. But wherever there are challenges, that means you've taken things for granted and you've not been grateful in that area. I really want you to take a moment and just think about it. You don't have to share with anyone. Just introspect and see कौन से areas. रिश्ते हैं, बहुत अच्छे हैं सारे, या कहीं पे कुछ किरकिर चल रही है. Health, are you fit and fine? Or are you having some issues? Money, are you having abundance? Or are you always worried about money? How's your relationship with your own self? Do you love yourself? Are you always criticizing your own self? Comparing yourself with others? Think. कभी सोचा भी नहीं ना हमने ऐसे अपनी जिंदगी के बारे में. चल रही है. We are just living life. We are surviving it. We're not living actually. We're just surviving it. Life is just going by. ऐसे जा रही है और हम उसको देखने जाते हुए. उसके बीच में involved नहीं है. This book helps you to get involved with your life. See in which direction it is going and how can you course correct it and take it in the right direction. So this magic of gratitude works for everyone. No matter who you are, no matter where you are, no matter whatever is the circumstances, your current circumstances are, it will definitely work for you. हम लोग ना बड़े नॉलेज जंकीज बन गए हैं. नॉलेज इतनी अवेलेबल है इस टाइम इंटरनेट पे, हम लोग ना उसको चारों तरफ से बस इकट्ठा करने में लगे हुए हैं. उसको हम बोलते हैं बुद्धि विलास कर रहे हैं. बुद्धि विलास. और उसको मतलब इकट्ठा करे जा रहे हैं नॉलेज को. ये भी ले लो, ये भी ले लो. अरे ये भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम है. अरे ये भी बड़ी अच्छी बातें कर रहा है. इसको भी सुन लेते हैं, इसको भी सुन लेते हैं. What is happening? You just कहते हैं ना वो इकट्ठा करे जा रहे हो आप उसको. मौका कब आएगा उसको अप्लाई करने का? So knowledge is a treasure. No, there's no doubt about it. जितनी नॉलेज आप लोगे वो ट्रेजर है. और उसको खोलोगे कौन सी चाबी से? चाबी भी तो चाहिए उसको खोलने के लिए. And the key to open that treasure is practice.
implementation. Whatever knowledge you're gathering will give you only information. It will not give you transformation. Whatever you will implement in your life will give you transformation. So are you interested in only information or transformation? Choice is yours. Information तो भर भर के ले रहे हैं हम. इसको ना इतना हमने क्लटर कर दिया है, इतना क्लटर कर दिया है कि इसमें जरा सी भी जगह नहीं बची हुई है. So start decluttering your mind. Stop taking unnecessary information. Insta पे और Facebook पे, और हम लोग जब शुरू होते हैं तो वो खत्म ही नहीं करते हैं. Hours we are doing that to no avail. So just start taking information which is selective. You know what? The kind of information you are taking inside, input of your information, is what is creating the kind of thoughts you and feelings you have in your life. And that is what will you attract. आपको मालूम है जब लॉकडाउन हुआ तब से लेके मेरे अब तक मेरे घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है. And I don't watch news because it only gives negative information. And I don't want that. How to sanitize the information? कि मुझे क्या information लेनी है, क्या नहीं लेनी है, is your responsibility. And when you start sanitizing that, be selective about that, then you will be able to implement it also, na? Because then you will be focused on it. You will be aware of it. तभी तो कह रही हूँ 80 to 90% negativity चलती है हमारे दिमाग में, हम सबके दिमाग में. So if you really want to transform your life and go from where you are to where you want, goal है कोई? कहीं पहुंचना चाहते हो? कैसी जिंदगी जीना चाहते हो? अगर वो चाहिए, then gratitude is the bridge. नहीं चाहिए तो चल ही रही है जिंदगी, क्या फर्क पड़ रहा है? जितनी लिखी है चलती जा रही है. You're just watching, you're just देख रहे हो जिंदगी चल रही है और आप चल रहे हो. But are you being a player? Are you on the court? Are you participating? Are you sitting on the stands? जब मैच चल रहा होता है, आप स्टैंड पे बैठ के देख रहे हो कि आप ग्राउंड में जाके खेल रहे हो. अगर आप ग्राउंड में खेलना चाहते हो, गोल करना चाहते हो, then you have to practice gratitude, which is the easiest way to achieve whatever you want in your life. So this book has 28 days practices, which Ria and Shabana told me that I should take sessions every Tuesday and try to cover the whole subject of whatever is mentioned in this book. So I will try to, you know, गागर में सागर भरने की कोशिश करूंगी, because ये किताब तो is like a sagar. Every time I read, I get something new out of it, because there are so many riddles in this book, वो जो अपने आप को धीरे-धीरे uncover करती हैं, because riddles को आप uncover नहीं कर सकते हो. It's the universe who will give you the direction. इसको पढ़, इसको खोल के देख, इसमें क्या है. So मैं every time I read it, I, you know, uncover new riddles. So I call it, it's like an ocean. बट उसमें से मैं कुछ लाकर आपसे शेयर करूंगी जो मेरी बुद्धि से मैंने ज्ञान को थोड़ा बहुत लिया है उसमें से. I would like to share it with you, right? So there is a formula which is called magical formula, which is given in this book. Are you interested to know the magical formula? How many of you are interested? Raise your hands. Great. Okay. Okay. So we all know gratitude करने के लिए हमें thank you बोलना होता है. अब आपको मालूम है thank you कैसे बोलते हैं? आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? Thank you तो ऐसे ही बोलना होता है कि हाँ भी किसी ने हमारे लिए कुछ किया, हमने thank you बोल दिया. But you know, there's a proper technique to say thank you, which will actually generate the gratitude की feeling inside. Because feeling is the only thing, you know, feeling ही आपकी जाती है universe में
जो वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में लाएंगी। और फीलिंग क्या है? फीलिंग तब आती है जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो और बाद में बोलते हो किस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने पानी का ग्लास ला के दिया, तो आप क्या बोलते हैं? थैंक यू। आप काम कर रहे हो और आपने पानी मांगा, सुनो एक गिलास पानी देना, तो शी ब्रिंग्स वाटर एंड ये लो। आप उसकी तरफ देखते भी नहीं हो, पानी लेते और बोलते थैंक यू बोलना है भाई, सुना है हमने कि थैंक यू बोलना चाहिए, तो आप बोलते थैंक यू। आप अपना काम करो, उसकी तरफ देखा भी नहीं आपने। So when you say thank you to somebody, you're supposed to look at that person, look into that person's eyes, smile a bit, and say thank you for what? So thank you for giving me a glass of water. Thank you. That is how you're supposed to say thank you. And if you're speaking to somebody on the phone and you say thank you, smile, because your smile goes through the phone also. So smile and tell that person also, why are you thankful? किस चीज के लिए थैंकफुल? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कस्टमर केयर में फोन किया एंड दैट पर्सन रियली हेल्प यू इन रिजॉल्विंग दैट इशू, जो भी आपका इशू था, एंड यू जनरली से ओके थैंक यू, एंड यू पुट डाउन द फोन एंड यू से thank you so much, I'm so grateful that you really resolved my issue and I am so relieved now. Now when you say all these things, you will start feeling it, and feeling is the fuel. जितना फील करके बोलते हो, जब आप गुस्से में भी फील करके बोलते हो ना, उसका भी असर होता है। ऐसे जब ग्रेटिट्यूड को आप फील करके बोलोगे ना, यू विल गेट whatever you want in your life. What goes around comes around. अभी हमने रिसेंटली एक गेम शुरू किया है, couple of us, creating abundance in our life. मनी को हमने बुलाना है अपनी जिंदगी में, तो हमने ना सर्कल ऑफ मनी के सर्कल शुरू किए हैं, बिकॉज एनीथिंग यू सेंड इन द यूनिवर्स कम्स बैक टू यू, इट्स अ सर्कल। जैसे मैंने पहले बोला, व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड। आप अच्छा बोलोगे तो कोई आपसे बहुत प्यार से बोलेगा, आप किसी को गुस्से से बोलोगे तो वो भी वापस आएगा। आपने किसी को पैसे दिए, फॉर एग्जाम्पल आपने सब्जी खरीदी और सब्जी वाला कह रहा है जी ये तो जी 10 रुपए किलो है। क्या भाई, कैसी बात करता है, 8 रुपए सारी दुनिया दे रही है, ये ले 8 रुपए, और आपने उसको 8 रुपए थमा दिए। अब आपने कौन सी फीलिंग के साथ उसको पैसे दिए? उसी फीलिंग के साथ ही आपके पास पैसे आने वाले हैं या जाने वाले। डू यू गेट दैट? बट वही पैसे आपने अगर उसको बड़े प्यार से बोले, थैंक यू भैया, बड़ी अच्छी सब्जी लेके आते हो आप ना, फ्रेश वेजिटेबल हमारे लिए लेके आते हो, थैंक यू सो मच। आप लोग सुबह सुबह 2 बजे उठ के मंडी में जाते हो, लेके आते हो, बहुत मेहनत है भैया आपकी, थैंक यू सो मच। और आपने उसको पैसे इस तरह से दिए जैसे आप उसको कोई रिवॉर्ड या अवार्ड दे रहे हो, rather than ऐसे पैसे फेंकते हुए। That money which you give with that feeling will come back to you. So Newton says इक्वल रिएक्शन तो है, बट इक्वल के ज्यादा भी आता है। क्यों? बिकॉज जिस फीलिंग के साथ आप भेजते हो ना, वो फीलिंग है ना, अगर बहुत ब्लेसिंग्स के साथ दे रहे हो आप पैसे, तो वो भर भर के आते हैं। आपने 10 दिए तो 100 रुपए आएंगे आपके पास, कहां से आएंगे आपको नहीं पता। इन द सीक्रेट मूवी व्हाट इट सेज, आस्क एंड बिलीव। आप जो मांग रहे हो वो मांगो और बिलीव करो कि वो आ रहा है, एंड देन रिसीव इट। कैसे आएगा? यू डोंट हैव टू वरी, डोंट हाउ, अलाउ। तो इसी तरह से हमने भी मनी के सर्कल शुरू किए हैं, एवरी डे वी डू 10 सर्कल्स। तो उसमें जितने प्यार से, ग्रेटिट्यूड से आप पैसा भेजते हो, वो पैसा कहाँ से आएगा आपको नहीं पता। We just started 4 days back. I have received unexpected money twice in 4 days. One, I have received AED, that is the Dubai money, and I've received 3,000 rupees yesterday in my account. I was not expecting it, but it came. So whatever you send, whatever you are giving gratitude to, will come back to you. और भर भर के आता है। आप खुशियां दोगे, खुशियां भर भर के आएंगी आपके पास। आप किसी को प्यार दोगे, प्यार आपके पास, दुनिया से लोग इतना प्यार करना शुरू कर देंगे आपको। So everything, if you're paying gratitude for your health, I recently had a problem with my feet, and I was walking and I was not able to walk and I was crying. And then I just checked myself. Why am I crying? That means I'm complaining. And every step I started taking,
आई वाज जस्ट सेइंग थैंक यू, एंड रास्ते निकल आए, इस डॉक्टर को दिखाओ, एंड उस डॉक्टर ने मेडिसिन दी, विद इन 4 days आई एम फाइन. आई वाज सफरिंग फॉर 1 month. I was not paying attention to it. So when you start practicing it ना, आपके हर एरिया में वो लाइफ के वो gratitude starts working. Now this book talks about all the areas of life, which I said, health के बारे में भी है, relationships के बारे में भी है, and money के बारे में भी है, negative situations को positive कैसे करना है इसके बारे में भी है, हमारे past experiences जिनको हम पकड़ के बैठे हैं उनको छोड़ने के बारे में भी है, उन लोगों के बारे में जिन्होंने हमारी जिंदगी को डायरेक्शन दी या जब हमें जरूरत थी वो हमारे साथ खड़े रहे. So in this book covers lots of things which I will be sharing with you in the upcoming sessions. So right now what I want you to do is I want you to write your dreams. When I asked the person who was 65 कि आप अपने dreams लिखो, जिंदगी बीत गई अब काहे के dreams. I said, sit down and think about जब आप छोटे थे, जब आप जवान थे, कॉलेज में थे या स्कूल में थे, कुछ तो सपने रहे होंगे ना. ये होगा कि मैं फलानी जगह घूमने जाऊंगा, या बहुत सारे लोगों ने अभी तक एयर ट्रैवल नहीं किया. आई विल ट्रैवल इन बाय एयर, और आई विल स्टे इन अ 5-star होटल, या मैं किसी दिन 5-star होटल में जाके चाय पी के आऊंगा या खाना खा के आऊंगा. कुछ ना कुछ सपने सबके होते हैं. Like for me, my dream is to go to Maldives. एंड ट्रैवल का हो सकता है, कुछ खाने का हो सकता है, कुछ कहीं जाने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिश्ते के बारे में हो सकता है कि आई विश माय हस्बैंड इज वेरी रोमांटिक एंड वी बोथ आर गोइंग ऑन अ रोमांटिक हॉलिडे. कुछ भी हो सकता है यार, सपने होते हैं, सबके होते हैं, पर हमने उनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया. बचपन में कितने एक्साइटेड होते थे, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब मैं ये करूंगा, तब मैं वो करूंगा, पर वो कहीं जिंदगी की जिम्मेवारियों में और परेशानियों में वो कहीं दब के रह गए हैं. तो आज मैं आपसे बोलूंगी, उस बच्चे को बाहर निकालो जिसने वो सपने देखे थे, एंड उसके बाद भी बहुत सारे सपने हमारे ऐड होते चले जाते हैं, पर हम ना उनको दबा देते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कि नहीं यार, पहले बच्चों की पढ़ाई देख लो, बच्चों की शादियां देख लो, हमने उनको कहीं दबा दिया है. आई रियली वॉन्ट यू टू राइट 10 सच ड्रीम्स टूडे. दिस इज योर असाइनमेंट. अब ये लिखना कैसे है, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, आपके पास मेन्यू कार्ड आता है, आप मेन्यू कार्ड में से कुछ 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 सोचते हो कि मुझे ये खाना है. अब मेन्यू कार्ड में तो चाइनीज भी है, मेन्यू कार्ड में नॉन वेजिटेरियन भी है, उसमें कॉन्टिनेंटल भी दिया हुआ है और साउथ इंडियन भी दिया हुआ है और नॉर्थ इंडियन भी दिया हुआ है. अब आपकी इच्छा क्या खाने की है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, आप गए, आपने बोला कि यार आज तो मुझे ना साउथ इंडियन खाने का मन है, तो आपने क्या बोला उसको जो आया ऑर्डर लेने के लिए कि भैया एक तो आप डोसा ले आना, मसाला, ये मैसूर मसाला डोसा ले आना, और एक प्लेट आप ना इडली ले आना, और एक ना वो लेमन राइस है ना, वो लेमन राइस ले आना. आपने उसको स्पेसिफिकली बताया कि मुझे क्या चाहिए. Similarly, I want you to write your dreams like that, as specific as you can, because आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हो. अब ऑर्डर कितना सटीक होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या डिलीवर करेगा. तो अगर आपको हाउस चाहिए तो आप स्पेसिफिकली लिखो आपको कहाँ पर घर चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली में रहते हो, तो अभी जैसे यूनिटेक का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, अमिल्या है शायद उसका नाम. अगर आपको उसमें अपार्टमेंट चाहिए, कैसा अपार्टमेंट चाहिए, कौन से फ्लोर पे चाहिए. For example, I say I want a 4-bedroom apartment on the 10th floor, facing a pool. स्विमिंग पूल को फेस करता हुआ चाहिए, और मुझे 10th फ्लोर पे 4-bedroom अपार्टमेंट चाहिए, और मैंने वो लोकेशन भी बताई. So that is as specific as that. आपको बालकनी चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको अपने घर के आगे ड्राइववे चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको पार्किंग चाहिए कि नहीं, इट इज ऑल अबाउट यू. आपका सपना. आपको विला चाहिए फेसिंग अ बीच, तो विला कैसा होना चाहिए, कौन सी बीच पे होना चाहिए, व्हाइट सैंड बीच पे होना चाहिए कि आपको कहाँ चाहिए. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. सिमिलरली, आपको अगर ट्रैवल करना है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जाना है, कौन कौन से शहर देखने हैं,
So you have to be very specific कि मुझे सिडनी जाना है, मुझे पर्थ जाना है, नो आपको वो सब लिखना है कि मुझे कितने दिन सिडनी रुकना है, मुझे कितने दिन पर्थ रुकना है, मुझे कौन सी एयरलाइन से जाना है, मुझे बिजनेस क्लास जाना है या मुझे इकोनॉमी में जाना है, मैं कितने दिन के लिए वहां रहूंगा, कौन सी होटल में. गो ऑन अ नेट एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर द प्लेसेस. डू दैट, यू नो, दैट रिसर्च कि मुझे कौन सी होटल में ठहरना है, मुझे कौन सी वाली जगह देखने जाना है, मुझे यहाँ जाना है. यू विल फील सो एक्साइटेड व्हेन यू आर सर्चिंग. आजकल तो इंटरनेट पे सब अवेलेबल है. Just start looking for those things which you want in your life and then write it specifically कि आपके सपने क्या हैं. I want you to write 10 such dreams. जितने लिखे जाएं लिखो, पर 10 लिखो, कोशिश करो 10 लिखो. मैंने तो 20 लिखे थे, मैं और भी लिख सकती हूँ because वो ऐड होते रहते हैं. So write 10 such dreams because during this book, जब हम ये बुक के बारे में प्रैक्टिसेस करेंगे, you will be surprised to know कि आपके छोटे छोटे सपने तो बहुत जल्दी पूरे होने शुरू हो जाएंगे. As I said, हमने मनी सर्कल शुरू किए 4 दिन हुए हैं and I have already received money twice. Right? So magic happens. If you really believe in it, magic happens because universe is always listening. आप क्या बोल रहे हो, which is very important. And one thing which I would like to say is, you know, every word has a vibration. And आप जब भी लिखते हो कुछ ना, उसमें नो मत लिखना कभी भी कि ना मुझे ना पैरों में दर्द नहीं चाहिए. जब आप लिखते हो ना दर्द नहीं चाहिए, यूनिवर्स को नहीं वाला वर्ड यूज समझ ही नहीं आता, उसके डिक्शनरी में है ही नहीं. अब आपने नहीं हटा दिया तो क्या आएगा, मुझे पैरों में दर्द चाहिए. अभी हमको पता ही नहीं चलता हम मांगते कैसे हैं, because we are using the kind of words which universe doesn't even register. So be very careful about the words you are using. So now I have just started. मैं ना जब भी मुझे कोई क्वेश्चन, मैं किसी को कुछ बोलती थी and that person used to write, तो मैं आगे से लिखती थी no worries, no issues. And last 4-5 days I've started checking myself that I'm not supposed to use negative words. So I don't use no worries because no is also a negative word and worry is also a negative word. So I write okay, fine. I've started checking myself. It's all about awareness. And this book actually helps you to get aware of what are we doing in our life and why our life is the way it is. So this is what I wanted to share with you today because I think the time is also over. So there are 2 assignments which I want you to do. If you have not watched Secret, please do watch Secret movie today. It will help you to understand it better because this book is based on that. वो फाउंडेशन है इस बुक की. अगर आप उसको देखोगे तो you will be able to understand what is law of attraction, how does it work, and how can it work for you who's watching this. So to understand, I really want you to watch this movie before you come for the next session. You have 7 days. Usually I do this 30 days practice every single day. So because the book is also designed like that, but since we are doing it once a week, so you're getting a lot of time. So in this 7 days, watch this movie as many times as you can. एक बार में समझ भी नहीं आती, एक बार में वो अंदर जाती भी नहीं. I must have seen it 50 times by now. I'll watch it again today 51 times. I will also watch it with you guys. So watch Secret movie at least once during this period and write down your dreams as specific as you can. If you want to send your child for studies abroad, which university, which course, which month it starts, how much money will it cost, everything, as much detail as you can, because you are placing an order on universe to fulfill it. So be specific. I hope I've been able to add some value to your life today through this session. If you have any questions, you can ask. Thank you, Jagjit, for such a wonderful session and really inspiring us to, be in gratitude. Yeah. Anyone wants to add something or has any question?
Ma'am, like you mentioned, I mean, I'm just want to know a bit curious about it. Like, if you are being rude to someone, then you will have that circumstances when people will be rude to you if you're being polite. I mean, in both negative and positive sense. But like, suppose if you're a mentor, so you have to be, I don't say you have to be rude, but you have to be a little harsh with people for their own betterment. Not that you want to be rude. So, ma'am, that's if that's in a good intention, so how will you like describe that? So whatever intention you have is very good, but whatever comes out of your mouth and the feelings with which you say it, it's the feeling which matters. If you're feeling angry and then saying it, the anger is the feeling which is going, and somebody will definitely be angry with you. But if you're feeling concern about that person and then saying something, you will also get concern from somebody, but somebody will speak to you harshly, even if that person is having the intention of concern. It will definitely come back. So there are different ways to communicate. So there's a different subject on communication, which when we do those courses, we talk about that. So communication, the way you communicate is, which matters. You can communicate that in a positive way also, because the more positive you stay, your life will get impacted, because we are working only on yourself. यहाँ पे हम सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना, because हम किसी और को चेंज कर ही नहीं सकते हैं, पर अपने आप को अगर हमें चेंज करना है, अपनी जिंदगी में अगर पॉजिटिविटी लानी है, अपनी जिंदगी में अगर अबंडेंस को लाना है, we have to be aware of what are we talking and where are we going wrong, or we are not wrong, but where are we using negative emotions and negative feelings. I hope it answers your question. Yes, ma'am. Thank you so much. And so basically, you have to be polite, and you can be. It's not about changing others. Even if you want the betterment of others, suppose I'm a parent, so I have to scold sometimes the child only for their own good. So as a parent, it's my responsibility, because no one else will do that. Like, I'm not a parent as yet, but I'm just giving an example. If I have a responsibility of a younger sibling, so definitely my intentions are right, because I want their betterment, because ultimately I have an accountability. Like, if they don't do certain things certain way, if they misbehave, so I'm accountable for it. So, and if I am in a company, if I'm the CEO of a head of a company, accountability comes. But I agree with you that there are ways of saying things. You can say things. You can say very very harsh to people in the most politest way. So the message also gets conveyed, and the person doesn't even feel bad. Kya bol diya mujhe? Yeah, absolutely. And I would just like to add one more thing. Whatever you're saying is very generic kind of a thing you're talking about. Yes, so ma'am. if you have a question, you have to be very specific, something concerning your life which you are experiencing. Because if you are talking about what you are going through and what is the situation, I'll be able to help you and I'll be able to guide. Like suppose if I feel that one of my, this is just giving an example, one of my friends is going through depression and I want that person to come out of it. So I'll be polite also. I'll be a little harsh also, because I want the person, betterment of the person. My mind is not, my intention is not to demean the person, and I feel that the person can be dead at any time. And then when we hear such cases of suicide and all, and then we say that, oh, I wish I was there for you. So instead, for my intention is to be there for the person when the person is alive, and when I can actually, so I can scold the person, I can be a little harsh with the person, but with a good intention. So that's okay. Okay, I would just like to add, if somebody is going through depression, if you are not equipped to handle that kind of a situation, you should be seeking help from people who are, trained to, bring out people out of depression. Could be a counselor, could be a psychiatrist or something. If you're not in a position to help, scolding that person is not going to be the solution. Finding a solution to that issue is what needs to be addressed. That is what I would like to add. Ma'am, people are asking full name of author, that is Rhonda Byrne, and Udayji said experiences must,
And then Neelamji is asking, please mention the book. So the book is Magic. So the book's name is The Magic. The Magic. It's by Rhonda Byrne, and it is available in Hindi as well as in English. If you want, I can share the PDF of both the books if you are interested in it. And if The Hindi name is Rahasya Se Pare. if Shabana or the people who are running this show can allow me, I can share the PDF. You can go to the PDF and read it for yourself, or you can order it from the Amazon. It's available, and it's a beautiful book. And if you practice it, it's amazing. Yeah. What was the other question about the book? And is the PDF available? One of the participants have asked. Yeah, the PDF is available. I can share it. Okay, ma'am. Hello, ma'am. Good morning. Yeah, people are asking me to share PDF actually. I will do that. Good morning. Good morning. Yeah, good morning. Yeah. Just to know, I'm a little confused. Are we talking about the secret or are we talking about the magic? Okay, so I am asking everybody to watch the movie called The Secret, Okay. and the book I am going to be talking about is The Magic. Okay. The Secret is the basis or the foundation on which the magic has been written. If you remember in The Secret, it is talked about the feelings, and they said the easiest way is to practice gratitude. So Rhonda has written this book on gratitude, which is 28 days practice of gratitude. Every single day you can start adding gratitude in different areas of your life so that it becomes a way of life for you, and you stay in positive frame all the time and attract the kind of life you want. Okay. Thank you. Secret book author is Rhonda Bryan, dear Usha. Even magic is written by Rhonda Byrne. Yeah, Rhonda Bryan, both. So just because you're doing this, I'm excited, and so I'll just put in a word that I'm reading Secret, with my a group, which is called the book reading, and we are reading The Secret just now. And somebody's also put the movie, as you said, on the group. Wonderful, wonderful. I do sessions on magic, 30 days practice. Okay. Yeah. And we read the book and we do the practices for 30 days. And I just finished, I think it's been 25 days I finished it. And I keep doing it. So. Okay, do let us know. Sure, sure. Sabana allows, yeah. Okay. Thank you. Thank you. And we are so happy that you can do it every week now. Yeah. I love talking about gratitude because it's very close to my heart, because it has changed my life, and many people, people who have been practicing it with me, the hundreds of them who have done this book with me, and every time I get message from them that their life is, this area of their life is changed, and they're transformed, their relationship, got a new job, the kind of job they wanted, they've got a new house, the kind of house they wanted. And it is so fulfilling and so, so heartening to see when people are practicing it. It is only practice which will help you to achieve whatever you want. Yeah. Hello. Yes, please. जगजीत मैम, थैंक यू सो मच. मैं काफी बिलीव करती हूँ जो आपने बोला है, बिना ये बुक पढ़े हुए भी. एंड मेरी एक मेंटर है, उन्होंने इस तरह से गाइड किया था. मेरा क्वेश्चन है कि अगर किसी को कभी कोई बीमारी हुई, कोई तकलीफ हुई, और या लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंसेस हुए, डाउनफॉल आया फाइनेंशियल या किसी भी सेंस में, रिलेशनशिप में, तो क्या उसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए कि उससे हम सीखे और आगे निकले? हम मीन्स एनीबॉडी, XYZ. तो Absolutely. So first या of ये all, मेरा क्वेश्चन है, उसमें थैंकफुल होना चाहिए उस सिचुएशन के लिए भी. Yeah. ये मेरा क्वेश्चन है आपसे. Yeah, thank you so much for asking this question. So हमारी जिंदगी में जहां पर भी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आए हैं ना, that means we have not been grateful in that area of life. That means we have taken that area of life for granted, whether it is a relationship, whether it is health. Yeah. So the only thing is, once you start paying gratitude to that, the universe will start giving you the solutions. For example, जब मेरे को अपनी आँख की प्रॉब्लम हुई, and I was really worried about it, and I was concerned about it. When I started paying gratitude to my eyes, हम इन आँखों से बचपन से लेके अब तक कितना देखा है,
कितना कुछ पढ़ा है, कितना कुछ देखा है, अपने लव्ड वन की हम फोटो देख पाते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आजकल तो वीडियो पे भी इतने डिस्टेंट लोगों से बात कर पाते हैं, अपने आप को देख पाते हैं मिरर में, पढ़ पाते हैं, है ना, मूवीज देख पाते हैं, कितना कुछ करते हैं हम इन आंखों से, पर हमने कभी इनको थैंक यू बोला ही नहीं। So when I started paying thank you to my eyes, from somewhere somebody sent me a video to do some eye exercises. अपने आप मेरे पास कहीं से आया, because universe is listening to you all the time and responding. And I started doing those exercises and my eyesight improved. तो जब भी आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू करोगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपके पास आएगा चल के। somebody will come and mention something to you or guide you to something. आपके रिश्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप उसके बारे में ग्रेटिट्यूड देना शुरू करोगे, आपको खुद समझ आ जाएगा कहाँ पे गलती हो रही थी। You know, because you can never change anybody else. You have to work only on yourself. और हम सारी जिंदगी दूसरों को बदलने में लगा देते हैं। इससे ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कोई बात होती है, इस तरीके से बात करता है क्या कोई? So we are always trying to change the other person and complaining and blaming. One complain, रिश्ता 10 स्टेप नीचे जाएगा ही जाएगा। One complain about health, health नीचे जाएगी ही जाएगी। So you have to be grateful in every situation, whatever the situation is, to improve it, to take it to the next level. I hope it answers your question. I can't hear you. Just for example. Okay, go ahead, please. Yeah. Yes, ma'am. Now we can hear you, ma'am. Okay. Like, अगर किसी का नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल नुकसान हुआ है किसी का, आपने कहा कि पर्सनल पे बात करें तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, मैं ऐसे जनरल बोल रही हूँ, कभी किसी का पास में नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड देना चाहिए कि हमने उससे कुछ सीखा और we become stronger, better person. And yes. So there is a particular chapter in this book which says how to convert your negative into positive. Negative situation से आप positive कैसे बना सकते हो? So when we come to that chapter, definitely your question will be answered. Yeah. It's too early to talk about it right now because we have just set the foundation only today. So let's start working from foundation upwards. I hope it answers. Hello? Yes, I'll wait for that chapter and I'll wait for the PDF and then we'll take it from there. I will share the PDF. If they allow me, I will share the PDF too. Yes, Yes, looking forward to receiving He it. has read this book and you have explained well. And she has thanked you for the first gratitude of the day for this section. Thank you so much. Thank you so much. Anybody else has any question? Okay. So can we conclude it now? Okay. So thank you very much to all of you for being so attentive and giving me this opportunity to speak to you. And आप लोगों ने बड़े प्यार से मुझे सुना है, and I'm so happy that I've been able to contribute something to all of you and add some value to your life. And I will be sharing the PDF. You can read the book on your own, so that when you come for the next session, you also know what we are talking about and we are on the same page. Thank you so much, Shabana. Thank you, Ria.